Good morning, my dear student. Today topic start now. A block elements. A block elements. First question is, what is a block elements? What is a block elements? The elements in which last electron entire n-2 f orbital. The elements in which last electron entire in n-2 f orbital are called a block elements. What is a block elements? The elements in which last electron enter. The elements in which last electron या enter n-2 f orbital. The elements in which last electron enter in n-2 f orbital are called a block elements. A block elements. What is a block elements? The elements in which last electron enter in n-2 f orbital are called a block elements. Okay. A block elements. Next point is a block elements are known as rare earth metal. A block elements are rare earth metal or rare earth elements. A block elements are known as rare earth elements, rare earth metals. A block elements are rare earth metal or rare earth metal. A block elements are known as rare earth metal or rare earth elements. Okay. Electronic configuration of, next point is electronic configuration of a block. Electronic configuration of a block elements. Electronic configuration of a block elements n-2 f 1 to 14 and n-1 d only 0 to 1. n-2 f 1 to 14 and n-1 d 0 to 1 and ns2 n-2 f 1 to 14 n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 and ns2. Okay, so write the electronic configuration of a block elements. Write the question first. Write the electronic configuration of a block elements n-2. Answer this question. n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 and ns2. Second question. Write the electronic configuration of 4f series. Write the electronic configuration of 4f series or first transitional series. First inner transitional series. First transitional series. What is the electronic configuration of 4f series or first inner transitional series? So n is equal to 4f series. n की जगह पुट कर दो आप n-2 की जगह आप पुट कर दो 4f 1 to 14 1 n-2 इज इक्वल टू 4 है. इसका मतलब हो गया कि n इज इक्वल टू 6. n-2 f इज इक्वल टू 4. n इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. तो n इज इक्वल टू 6. तो 4f 1 to 14 n-1 6 minus 1 5d 0 to 1 and 6s2. या फिर ऐसे कर लो कि 4f सीरीज नंबर ऑफ पीरियड्स 4f सीरीज
में नंबर्स ऑफ पीरियड्स इन 4f सीरीज, नंबर्स ऑफ पीरियड प्रेजेंट इन 4f सीरीज के अंदर नंबर्स ऑफ पीरियड होंगे आपके पास सिक्स्थ पीरियड। n इज इक्वल टू कितना हो गया 6, n इज इक्वल टू 6, तो पुट कर दो n की जगह 6, तो 6 माइनस 2 4f, 6 माइनस 1 5d, 6s2। नेक्स्ट पॉइंट इज 28 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल 28 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, दैट इज एटॉमिक नंबर 58 to 71 and 90 to 103। 28 elements in periodic table, that is atomic number 58 to 71 and atomic number 90 to 103 elements. Total 14 elements. These elements are 4f series elements. 90 to 103, total number of elements 14 elements and 5f series. 4f series is called lengthenoid series. 4f series is called lengthenoid series and 5f series is called actinoid series. 4f series is called lengthenoid series, 4f series is called lengthenoid series and 5f series is called actinoid series. NS, N minus 1D, N minus 2F. NS means outermost cell. N minus 1D, N minus D, transitional elements and N minus 2F, inner transitional elements. NS outermost cell and N minus 1D transitional elements and N minus 2F inner transitional elements. NS, N minus 1D and N minus 2F. ये जो NS के जो इलेक्ट्रॉन है, NS के इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने के बाद में NS के इलेक्ट्रॉन्स N minus 2F, N minus 1D, NS के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद में ये जो रिमेनिंग ऑर्बिटल जो है N minus 2F एंड N minus 1D ऑर्बिटल, NS आउटरमोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में जो रिमेनिंग ऑर्बिटल के NS के इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में बचे हुए जो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे बोला जाता है कर्नेल। इस ऑर्बिटल को N minus 2F और N minus 1D आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद में जो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उन्हें बोला जाता है कर्नेल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बोला गया है कि these elements are known as inner transition elements in periodic table 58 to 71, 90 to 103, lengthenoid elements and actinoid elements. Lengthenoid elements and actinoid elements are known as inner transition elements. Lengthenoid elements and actinoid elements are known as inner transitional elements. Lengthenoid elements and actinoid elements are inner transitional elements because lengthenoid elements and actinoid elements are called inner transition elements because N minus 2F orbital is found comparatively deep inside the kernel. N minus 2F orbital is found comparatively deep inside in kernel. ये कर्नेल से भी अंदर है। आउटरमोस्ट सेल को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन्हें बोला जाता है कर्नेल। बट N minus 2F के अंदर होता क्या है कि रीजन क्या है कि इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट बिकॉज रीजन क्या होगा इसका, रीजन ये है कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के भी ये क्या है
इनर साइड के अंदर है, तो n माइनस टू एफ ऑर्बिटल इज फाउंड कंपेरेटिवली, n minus 2f orbital is found comparatively deep inside the kernel. Okay student, n minus 2f orbital is found comparatively deep inside the kernel. Second reason, first reason, n minus 2f orbital is found comparatively deep inside the kernel. N minus 2f orbital is found comparatively deep inside the kernel. Okay, n minus 2f orbital comes before transition elements. N minus 2f orbitals before transitional elements. This is transition elements. D orbital is transition elements. So n minus 2f orbital comes before transitional elements orbital, that is d orbital. n minus 2f orbitals comes before transitional elements orbital, that is d orbital. Okay, next point, what is lanthanoid? After lanthanum elements, what is lanthanoid elements? After lanthanum, what is lanthanoid elements? After lanthanum elements are called lanthanoid elements. After lanthanum elements is called lanthanoid elements. 4f block elements are called lanthanides. 4f block elements are called lanthanides elements, and maximum electron fill in lanthanoid series 14. Maximum electron fill in 4f series 14 electrons. And actinoid elements after actinium elements are called actinoids. After actinium elements is called actinoids elements. 5f block elements or 5 block elements is called actinides. 5 block elements is called actinide. Maximum electron fill in 5f series 14 electron. Maximum electron fill in 5f series 14 electron. Okay, next topics. Lanthanoids, the elements of f block in which incoming electron enter in 4f orbitals. The elements of f block in which incoming electron enters in 4f orbital are known as lanthanoid. The elements of f block in which incoming electron enter in 4f orbital are known as lanthanoid. The elements of f block
F block in which incoming entire electron in 4f series or 4f orbitals. The elements of F block in which incoming electrons enter in F4f orbital are known as lanthanoid elements. Lanthanoids are called lanthanoid. Next point is promethium PM. Important. Promethium is only elements which is artificial and radioactive. In which artificial and radioactive. Promethium is the only elements. Promethium. Start now. Promethium is the only elements which is artificial and radioactive. Promethium is the only elements artificial and radioactive. Okay. These are elements 14 in the series. These are 14 elements in the series. In the series means 4f series. 14 elements. These are 14 elements in the 4f series. Next point is this series is also known as first inner transitional elements. 4f series is called first inner transitional elements. Inner transitional series. 4f series is first inner transitional series and 5f series is equal to second inner transitional elements. Series. 4f series is equal to first inner transitional series and 5f second inner transitional series. So this series is also known as first inner transitional series and this series is also known as second inner transitional series. Okay. Next point is these are included in sixth period and third group. Sixth period and third group. Sixth period and third group. Sixth period. These are included in sixth period and third group. 4f series are included in sixth period and third group of the periodic table. So these are included in sixth period and third groups of the periodic table. Okay. Next point is their general electronic configuration of lanthanoid series. Their general electronic configuration is lanthanoid series 4f 0 to 14 5d 1 increase and minus 2f 0 to 14 and minus 1d 0 to 1 and ns 2. Okay. 4f 1 increase 5d 0 to 1 and 1 increase 6s2. 4f series 4f 5d and 6s. 4f 0 to 14 and 5d 0 to 1 and 6s2. Okay. 6s2. Next point is 14 elements lanthanides similarity to 14 elements lanthanoid similarity to yttrium compounds, yttrium elements, not compounds, yttrium elements. 39 atomic number. 14 elements lanthanoid series, lanthanoids 14 elements in lanthanoids similarity to
yttrium elements, similar to yttrium elements, because first point is same ionic radius, and second found collectively in minerals. 14 elements lanthanoid similar to yttrium, because first same ionic radius, and second found collectively in minerals. Sachin Yuvraj Laiga AC. Scandium, yttrium, lanthanoid and actinoid. 4F series, fourth period, fifth period, sixth period and seventh period. 4D series, 5D series, 6D series and 7D series. 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. 4F series and 5F series. Fourth period, fifth, sixth and seventh period. 3D series, 4D series, 5D series and 6D series, and 4F series and 5F series. The 14 elements of lanthanoid similar to yttrium elements, because same ionic radius and found collectively in minerals. Next point is electronic configuration of lanthanoid. Electronic configuration of lanthanoids. Next point is electronic configuration of lanthanoids. Elements, symbol, electronic configuration. Elements, lanthanoid, सीने पर नदियाँ प्रेम सी समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम इब लुटवाई. सीने पर नदियाँ प्रेम सी समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम इब लुटवाई. ओके. LA means lanthanum. CE means cerium. LA means lanthanum, C means cerium. PR praseodymium, neodymium and promethium and samramium, europium, gadolinium, terbium, diosporium and holmium, erbium, thollium, herbium and lutetium. ओके. ये आपको याद नहीं करना है, बस ओनली एलिमेंट सीरीज याद रखनी है. एलिमेंट्स लैंथेनोइड, सीरियम, PR, ND, PM, SM, EU, GD, TB, DY, PM, ER, TM, YB and LU. First elements in words of large words and second words is small. Return of elements name first large words and second smalls. Symbol, elements and symbol. Okay. Atomic number of lanthanoids and 57. एटॉमिक नंबर कर देते हैं यहाँ पर. सिंबल तो यहाँ कर देते हैं SY. सिंबल एटॉमिक नंबर 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 and 71. Okay, 71. Electronic configuration. Xenon, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन. 2, 10, 18, 36, 2, 10 एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, 2 नियोन, 10 ऑर्गन, 18 क्रिप्टॉन, 36 जेनॉन, 54, 86. तो जीनॉन 54 एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4f सीरीज, 4f 0 to 14, 5d 0 to 2, 0 to 1 and 6s2. 4f, so 4f, then 4f 5d and 6s, 4f 5d and 6s, 4f 0, 6s2, 5d, 54 और 2 56, 56 और 1 57. कंप्लीट. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम, जीनॉन 54, 4f 5d एंड 6s. बेटा देखो जीनॉन तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के अंदर क्या कर दें, जीनॉन नोट कर लें. जीनॉन 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 एंड जीनॉन एंड जीनॉन. 4f 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 and 4f. 5d 6s, 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 5d 6s and 5d 6s. अपने पास ट्रिक है. ट्रिक लालू की गाड़ी से, लालू की गाड़ी से, लालू की गाड़ी से फिल इन D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. D1 फिल करें, बाकी जितने भी रिमेनिंग हैं उन सभी के अंदर D0 फिल करें. लालू की गाड़ी से में D1 फिल करें, बाकी अदर रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के अंदर D0 फिल करें. ला लू लालू गाड़ी से, लालू की गाड़ी से फिल इन ओनली D1 इलेक्ट्रॉन. डी इन ऑर्बिटल ओनली D1 इलेक्ट्रॉन. डी ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. फिल इन ओनली डी ऑर्बिटल ओनली ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विच नेम ऑफ लेंथेनॉइड, सीरियम, गैडमियम और एल्यूम. लालू की गाड़ी से D1 ला लू गाड़ी से, लालू की गाड़ी से D1 और रिमेनिंग एलिमेंट जितने भी हैं उन सभी के अंदर 5D के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन फिल करें. तो 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0. ओके. 6s 2 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 2. एस ऑर्बिटल के अंदर कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें. डी ऑर्बिटल के अंदर लालू की गाड़ी से में ओनली ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फिल, बाकी सभी के अंदर D0 फिल करें. अब बच्चे आपके पास 4f ऑर्बिटल. 4f ऑर्बिटल के अंदर आपको क्या करने हैं, 4f 54 54 56 57
58 है टोटल, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। 59 है टोटल। प्रोमियम, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोमियम 59, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोमियम PR 4f 5d0 6s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रेसियोडीमियम। ओके, तो 59 एक्सीजीनोन, PR मीन्स प्रोजियोडीमियम, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोजियोडीमियम 59, जीनोन 4f 5d6, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोमेथियम 59, 54 जीनोन, एटॉमिक नंबर ऑफ जीनोन 54 एंड 52 54 प्लस 52 54 प्लस 2 56 56 0 56 टोटल 59, 56 56 57 58 59, 4f 3, f के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, f के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, बट गैडमियम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। देखो 64 64 54 54 और 2 56 57 57 और 7 64। ओके, 4f 9 65 54 एंड 2 56 56 एंड 9 65। ओके, 65, 4f 9 4f 10 4f 11 4f 12 4f 13 4f 14 4f 14। सेकेंड ट्रिक, सीने में टीबी EUYB, सीने में टीबी यूरोपियन वाली, सीने में टीबी यूरोपियन वाली, सीने में टीबी यूरोपियन वाली। फिल इन इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल D1, फिल इन इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल D9, फिल इन इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल D7 एंड D14। 19714 ट्रिक 19714 19714 19714 CE D1, TB D9, EU D7 and YB D14। CE and TB जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CE and TB, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CE and TB, TB means terbium and CE means cerium, TB means terbium and CE means cerium। Cerium and terbium have general oxidation state of +4 and +4। Cerium and terbium have generally oxidation state of +4 oxidation state, and europium EU, europium and YB ytterbium, europium and europium and europium and ytterbium, europium and ytterbium, europium and ytterbium have generally oxidation state of +2, generally oxidation state of +2। सीने में TB EU YB +4 have oxidation state of +4 and +4 and +2 and +2। Last RBSc board 2018 question, write the two elements of have +2 oxidation state in F block elements of F block elements, 4 F block elements, cerium and TB। CE and TB have +4 oxidation state, and EU and YB europium and ytterbium +2 oxidation state। Okay, but
generally oxidation state of F block elements, generally oxidation state of F block elements +3, but generally oxidation state of F block elements only +3, but cerium and terbium, europium and Yb, cerium and terbium and europium and terbium have generally oxidation state of +4 and +2, have stable configuration of +4 and +2. Cerium, terbium, europium and ytterbium have generally oxidation stable oxidation state of Ce+4, Tb+4, Eu+2 and Yb+2, but generally oxidation state of complete F block elements have +3 oxidation state.